ठीक है, चलो। हाँ, मुझे एक बार कंफर्म कर लो वंस यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन, ठीक है। मैं अभी शीन क्लियर कर लेता हूँ। डेस्कटॉप। प्लीज लेट मी नो वंस यू गाइस आर एबल टू सी द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन इज विजिबल, यस यस। कूल। मैंने पहले कल बोला था कि इट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन इटसेल्फ इज ए मुश्किल टास्क है, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एट अ हाई लेवल सच दैट यू विल बी एबल टू हैंडल द इंटरव्यू। ठीक है। uh, चलो। So before starting this today's session, I want to give you a overview of what we have learned in the previous session. उसके बाद we will understand about fast RCNNs and faster RCNNs, and then we will do a coding example using a faster RCNN of object detection task. ठीक है। by 7 बजे तक we will complete the tech theory part, and उसके बाद we will start एक minute, we still have some people admit all, and उसके बाद we will go with the coding part, ठीक है। हाँ। so ठीक है, सो हम कल देखा था कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टास्क whenever we have an image, and in that image we want to find what objects are present inside the image, and also we want to understand the bounding box of the given particular object. It could be multiple number of objects, उसके बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टास्क। देन व्हाट इज अ लोकलाइजेशन? लोकलाइजेशन ये चीज है कि इफ यू हैव एन इमेज and there is only one object inside image that you want to predict, that we call it as the object localization. And if you have multiple objects to predict with bounding boxes, that we call it as an object detection task. And then we started looking at how you can do this using a normal CNN architecture. And then we have learned about bounding box representations. You can have bounding box in the center and width and height and the corner values as well. And you can convert the bounding box from one shape to other shape by doing some mathematical transformations, because box are always rectangles. ठीक है। And then we have seen what is a good bounding box, and we don't want to cover major background, we want to cover the object as clearly as possible. And then we have understood the difference between a Coco and YOLO formats. And then we see that if we have the CNN architecture, uske baad we do two architectures. One is for detecting the objects, one is for detecting the bounding boxes. इसको बोलते हैं bounding box regressor, इसको classification task बोलते हैं। And then if there are so many bounding box and so many objects, इसको कैसे handle करते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं? We take sliding window technique and we classify the objects whatever that are present inside the image, and we also classify one more object called background, such that we want to have positive labels and negative labels inside the data. And then we have seen that by doing sliding window, we are getting a millions and millions of numbers of boxes that we want to train for, and that is not good enough. उसको solve करने के लिए we have one algorithm called selective search algorithm. And what selective search algorithm will do is it will take a look at all the bounding boxes, all the boxes are regions of proposals that we have inside the image, and it will give you 2000 of those boxes in which there is a high probability of getting an object. इसको बोलते हैं selective search algorithm. And how it will work? It will look at the image at a pixel levels, and based upon the numbers of pixels side by side, it will try to map if they are similar, and all the similar pixels will be mapped. And then once they are mapped, all the similar regions will be mapped again. So it is a two-level mapping. And then they will do this algorithm for multiple iterations. So initially, if you map, you get the output something like this. And based upon color similarity, texture similarity, size similarity, shape similarity, and all of those similarities, you get multiple merging everything, every iteration, and at the end you get something like this.
And select to search is not a classification algorithm, it is just like a segmentation algorithm. It doesn't know what contains inside the image, but it only looks at the pixel values and it will try to segment the image into multiple sections. And why do we need it? Because we came from millions of boxes to 2000 boxes, and that will highly increase our performance actually. So, and then we have taken 2000 boxes, and हमें पता है कि in 2000 boxes पे there are very less number of boxes who are exactly at the object. So we want to filter out all the boxes which are not at the object level. So इसके लिए हम क्या करते हैं, we have something called as IOU score. So it is basically intersection over union of these boxes. And हम let's say मेरे पास एक ground truth box है, and these are all the possible proposed regions from the select to search algorithm. And then what we do is we take this box and we calculate IOU for all the boxes. And we take this another box and we take calculate IOU for all the boxes. At the end, हम क्या करते हैं? We will only keep all the boxes in which there is a higher IOU of 0.5. अगर 0.5 से ज़्यादा match हो रहे, then keep those boxes, and remaining those boxes, I want to classify them as a background image. I don't want them to be treated as a class. Sorry. So इसलिए we do that and we filter out a lot of less boxes. And then what if there is a box and it is overlapping with multiple objects of the ground truth? Then we have to pick the class in which it is having the highest IOA score. And then हम क्या करते हैं? For every proposed box region, we pass it to an algorithm, usually AlexNet or VGG or any kind of pre-trained architecture, and we extract the feature vector. And इस feature vector को we will try to do a classification task. अगर मेरे पास 100 है, for every classes you have one more background as well, and we get C+1 classes, and then that will do a classification task. And we will also use SVM to do the classification task again. And you might have questions like, if both are doing the same thing, why to do SVM? That is an interesting question, and they noticed that, and they improved that in the fast RCNN technique we will talk about today. And then we have this representation. मेरे पास एक ground truth box है, select से जितना boxes दे दिया, and then उसके बाद by applying a 0.5 filter of IOU you get this many select to such boxes and these many background proposals, and then we pass it to SVM. SVM में भी ऐसे हो जाता है. And then what we do is bounding box regressors. Now that we have tried to detect the object inside the image, now we want to train the bounding box as well. Yeah, let's say this is my image and this is one bounding box, this is another bounding box. Both are bounding boxes, but the first one is much better compared to the second one. So we want to fine tune these bounding boxes. So इसके लिए क्या करते हैं हम? So this is my ground truth bounding box जो हमने label करा, and this is our prediction bounding box. But this is not the best fit, right? So इसके लिए we do some transformations, either horizontal transformations, vertical transformations, or shifting, and those transformations will be changing for every object in every bounding box, right? So we do want to learn those transformations by using machine learning. So इसके लिए हम क्या करते हैं? We take the fully connected layer and we take the pooling layer, and after that we add all of these outputs as the learning parameters in these transformations as the output parameters of the model, and model will learn how to optimize based upon looking at older data. And उसके बाद we get all the sections. So हमने क्या क्या किया? We tried CNN, we tried SVM, and on top of it we trained the bounding box regressor. उसके बाद मॉडल ने प्रेडिक्ट करा. You might thinking how to train all of these things. So the in today's session we will do a like coding part as well. So don't worry, we will do a training as well. So हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है and machine predict किया बहुत सारे different boxes को, but we want to have only one box. So how to choose the first best fit box? By understanding that IOU should be larger with the ground truth, and also the prediction probability of the person should be higher. So हमने क्या करते हैं? First we take all the boxes and we sort them in the ascending order of the descending order of the prediction box, prediction objectiveness score, and then we calculate IOU, and then we will keep the box which is having the highest IOU score.
तो इसको बोलते हैं नॉन मैक्स सप्रेशन, ये टेक्निक को। एंड देन वी वांट टू एवेल्युएट द मॉडल। कैसे एवेल्युएट कर रहे हैं? एवेल्युएट करने का वी हैव अ टेक्निक कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एवरेज प्रिसिशन। एक ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज मोस्टली डिपेंडिंग ऑन द आईओयू स्कोर्स एंड प्रिसिशन एंड रिकॉल। समझो मेरे पास एक डेटा सेट है, यहाँ पे दो कुत्ते हैं, एंड आई हैव थ्री, दो बाउंडिंग बॉक्सेस ग्राउंड ट्रूथ से। जो ग्रीन कलर पे है वो बाउंडिंग बॉक्स है, जो येलो कलर पे है दोज आर प्रिडिक्शंस ऑफ द मॉडल। सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट डॉग, एंड देन इस पे सेकंड बॉक्स को आईओयू स्कोर ज्यादा है, दैट मीन्स इट्स अ करेक्ट प्रिडिक्शन। ठीक है, करेक्ट प्रिडिक्शन है। सो एंड द सेकंड बॉक्स, इफ यू लुक एट बॉक्स नंबर 1 एंड देर इज नो आईओयू स्कोर ग्रेटर देन 5.5 विद बोथ ऑफ दिस बॉक्स, इसको गलत प्रिडिक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट नंबर बॉक्स नंबर 3 इज ऑल्सो गलत प्रिडिक्शन है। सो वी कैलकुलेट द करेक्ट प्रिडिक्शन एंड रॉन्ग प्रिडिक्शन बेस्ड अपॉन आईओयू स्कोर, एंड उसके बाद वी कैलकुलेट द प्रिडिक्शन एंड रिकॉल। सो व्हाट इज अ प्रिडिक्शन? आउट ऑफ ऑल द प्रिडिक्टेड बॉक्सेस हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट? यहाँ पे 3 प्रिडिक्शंस है, इसमें एक सही है, सो इट इज 1/3। एंड रिकॉल क्या होता है? आउट ऑफ ऑल ऑफ माई ग्राउंड ट्रूथ वैल्यूज हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्टली प्रिडिक्टेड। सो यहाँ पे 2 है, इस पे एक ही सही है, सो इसलिए 1/2 रिकॉल है। सो लाइकवाइज हम क्या करते हैं? वी डू प्रिसिशन एंड रिकॉल फॉर ऑल द क्लासेस इंडिविजुअली। यहाँ पे लुक एट, देर आर 2 इमेजेस फॉर माई डॉग क्लास। इस पे 3 ग्राउंड ट्रूथ से एंड 4 प्रिडिक्शन है। सो यहाँ पे हमने प्रेशर एंड रिकॉल फॉर एवरी बॉक्स कैलकुलेट करते हैं एट 0.5 आईओयू, एंड देन 0.5 आईओयू पे यू गेट द ग्राफ लाइक दिस, प्रेशर एंड रिकॉल फॉर एवरी बॉक्स के लिए। एंड इसके एरिया अंडर करो बोलते हैं एवरेज प्रेशन। इट इज फॉर ओनली वन क्लास ऑफ डेटा। हम जैसे करते हैं फॉर एवरी क्लास एंड दोनों के एवरेज करते, उसको बोलते हैं मीन एवरेज प्रेशन। And this is calculated IOU score of 0.5. But we can tweak the IOU score at 0.6, 0.55, 0.7, 0.8. So what we usually do is we calculate at 0.5 up to 0.95 at a step of 0.05. And then the average precision will do average of that, and this will be our final average actually. अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो और मॉडल इज डूइंग रियली गुड, नहीं है तो अच्छा नहीं कर रहे। ठीक है, so this is what we have learned yesterday. I mean, I have gone through a lot of stuff. Any queries so far? ठीक है, visible, cool. So कल का हमने recap कर दिया, and then we will start understanding the fast RCNN and faster RCNN, and then we will go to the coding part of today's session. ठीक है, चलेगा। पेस अच्छा है, और डू यू वांट मी टू गो स्लो और फास्ट? आई मीन जो recap है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खत्म किया। सम कंफर्मेशन के भाई 30 पीपल, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन राइट? एक कंफर्मेशन दे दो, एक कोई ना कोई मैसेज, सो दैट आई नो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ओके, गुड, फाइन, फुड, गुड गुड गुड, ठीक है। सो सो लेट्स प्रोसीड। ठीक है, सो लेट्स गो टू दिस वन। सो here now I will go a little bit slow to explain what is happening and all that stuff. So after this RCNN is done, people did object detection and it worked really well. But as many of you have already questions like why to use multiple models and it is really slow, can we speed up this model? And even scientists thought about that, and then they introduced the disadvantage of RCNN. Disadvantage क्या है? इट इज ए मल्टी स्टेज पाइपलाइन है। एक CNN आर्किटेक्चर है, एक SVM है, एंड एक बाउंडिंग बॉक्स एग्रेसर है। इसके ऊपर NMS है, एंड इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ट्रेनिंग इज वेरी एक्सपेंसिव इन स्पेस एंड टाइम, एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इज वेरी स्लो एक्चुअली। ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर पाते हैं बट बहुत स्लो कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, वी हैव अ लॉट ऑफ regions. So this is regions of regions, and let me, and all of these regions individually you have to pass through CNN, and every time you pass through you do the predictions. Maybe here you have multiple branches, one is CNNs, one is SVMs, and one is bounding box regressor. And
इतना करने के लिए बहुत टाइम लगता है एंड बहुत स्पेस लेते हैं, and it is not ideal actually. And every time you have to pass every crop image into the CNN, and you have to compute loss, and you have to do a back propagation. And सोचो हर image को you are sending it 2000 times. So एक image is multiplied by 2000 times, and that takes a lot of time to train, a lot of GPU to be utilized, and all of that for a lot of very slow predictions actually. So इसलिए क्या करते हैं ये लोग, they introduced a concept called ROI pooling. We will talk about ROI pooling. Uh, so I'm let me show you that. Let's say मेरे पास एक इनपुट इमेज है, ठीक है, यहाँ पे दो बॉन्डिंग बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट टू सर्च ने ये रीजन्स दे दिया, दिस बॉन्डिंग बॉक्स आर द बॉक्सेस दैट आउटपुट फ्रॉम द सेलेक्ट टू सर्च। एंड हम क्या करते हैं, ये सारे इमेज को वी विल पास थ्रू ए प्री ट्रेन्ड CNN मॉडल, इसको बोलते हैं बैकबोन CNN मॉडल, ठीक है। एंड व्हाट दिस विल डू इज इट विल एक्सट्रैक्ट दीज पीसेस। सो इस पीस को एक्सट्रैक्ट किया यहाँ पे, एंड इफ यू लुक एट दिस वन, दिस पीस को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। नाउ इस पीस को हम फ्लैटन करते हैं, सो फ्लैटन, फ्लैटन करके उसके बाद वी डू ए फुल्ली कनेक्टेड लेयर, एंड एवरीथिंग वी कीप इट सेम, इट इज क्लासिफिकेशन टास्क कर लेते हैं। So here what we did is we took the input image and we applied select to search algorithm on top of it with the regions of proposals, and we pass this entire image only once to the CNN architecture, and this will extract you the regions of proposals, and this regions of proposals को हम flatten कर लेते हैं, and then उसके बाद हमने जो करना है वो करना है। बट यहाँ पे एक चीज है कि दिस इज ऑफ शेप 10/2 लेट्स अज्यूम, एंड दिस इज ऑफ शेप 12/12। अगर इसको फ्लैटन किया तो आई गेट अ वेक्टर ऑफ लेंथ 20, इसको फ्लैटन किया तो वेक्टर ऑफ लेंथ 144। if I don't know the exact output number that I am going to get when I am doing a flatten, how am I going to add a fully connected layer? इस फुल्ली कनेक्टेड लेयर को कितना डेंस यूनिट रखना है मुझे पता, दैट इज एन इश्यू राइट, बिकॉज एवरी इमेज will give you different aspect ratio of regions of proposals, and every aspect ratio image, once it is flattened, it is of different length vector। अगर मेरे पास हर बार डायनेमिक लेंथ आ रहा है, I cannot do a fully connected layer of how many dense units. So that is a problem that we have, right? So pass each image only once and get the region proposals and do flatten and fully connected layer. Problem is shape of the fully connected layer क्या करना है, different shapes आते हैं, so it will not work actually। ऐसे वाला टेक्निक, एक मिनट, so, कहाँ गए, हाँ, so this will not work actually। so इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, they introduced a concept called ROI pooling। so let me explain what is a max pooling first। समझो मेरे पास एक 3/3 इमेज, 4/4 इमेज है, the max pooling, everything we have learned in the first course actually। so I'm just rephrasing what is max pooling। मेरे पास पकड़ो, मेरे पास 2/2 मैट्रिक्स है, इसको क्या करते हैं हम, I will keep this 2/2 matrix here, and I will take the value at which the maximum value is present। let's say यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, so I will add the value 10 here। उसके बाद आई विल शिफ्ट दिस बॉक्स टू हियर, इस चार यूनिट्स पे जो कुछ भी बड़ा है उसको वैल्यू यहाँ कर लेते हैं। सो इसको बोलते हैं मैक्स पुलिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, दे इंट्रोड्यूस्ड ROI पुलिंग, ठीक है, एंड दे डिड ए फिक्स्ड आउटपुट। यहाँ पे जो कुछ भी मेरा इनपुट है, आई वांट माय आउटपुट टू बी ए फिक्स्ड आउटपुट, लेट्स से 4/4। अगर यहाँ पे 20/20 है, सो क्या करते हैं, इस 4/4 को इमेज पे डाल देते हैं,
it takes the maximum value, it adds here, and it will do a sliding window technique. ऐसे ऐसे कर लेते हैं, एंड इट विल ऑप्टिमाइज बेस्ड अपॉन द स्ट्राइड्स। अगर स्ट्राइड ज्यादा किया तो बड़ा इमेज को कम कर सकते हैं, अगर स्ट्राइड कम किया तो नॉर्मल कर सकते हैं। ऑल ऑफ दी स्ट्राइड्स पूलिंग वी हैव लर्नड इन द फर्स्ट कोर्स, इफ यू आर नॉट फेमिलियर जाके एक बार वॉच कर लो। एंड इसको करते, एंड here once we do a ROI pooling, you have final output like this. Now there are so many experiments that are being done. अगर मेरे पास एक image like this, and then मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स चाहिए मुझे आउटपुट के लिए, then I can start my matrix like this pooling के लिए, and I can do like this। इसको क्या करते हैं, वो भी एक चीज है ना। and then I can do a stride 1 and I can do a stride 2 as well। So they multiple चीजें कर सकते हैं एक्चुअली इस पे। एंड ये सारे टेक्निक साइंटिस्ट ने कोशिश किया कैसे पूलिंग करना है। we will not go in depth of how every pooling works, but सोचो कि they optimized a technique in which they do ideal pooling based upon dilation। in the previous concept we have learned about dilation, right? पिक्सेल्स को एक्सटेंड करते, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, ज्यादा कम नहीं करना है। एंड देन दे एवरी रीजन ऑफ प्रपोजल यू गेट अ फिक्स्ड आउटपुट। इट कुड बी एनीथिंग, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट इज दिस नंबर। एंड इसके बाद हमने फ्लैटन लेयर कर लेते हैं, सो दैट दिस इज अ फिक्स्ड लेंथ आउटपुट। एंड देन एक मिनट, हाँ ठीक है, सो इट इज अ फिक्स्ड लेंथ आउटपुट, एंड यहाँ पे आई विल डू एफसी लेयर्स। उसके बाद आई विल कंटिन्यू व्हाट एवर आई वांट। सो इसको बोलते हैं ROI पुलिंग। सो आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, because whenever you go for interviews on computer vision, they will ask about these techniques। they will not ask about explain the mathematics behind all of these things, because no one is going to understand those things। I learned these things because I want to teach, but if you are at an industry level who is working, no one is going to expect you to remember every mathematic details, but everyone expects you to remember the concepts and techniques that they have used from the previous model to advance to the next model, such that you will be able to explain them properly। अगर आपको concept का नाम पता है, that is good enough, because you can Google whenever you want to get the formulas। ठीक है, यहाँ पे देखो, आई कैन डू ए स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक दिस, और आई कैन डू लाइक दिस, एंड जो कुछ भी करके हमने एक आउटपुट ला लिया, ले लिया। एंड देन एक चीज है कि वी whenever we do the convolution layers, the values will be not integers actually। पकड़ो मेरे पास एक इमेज है, एंड इस पे पिक्सल वैल्यूज इंटीजर्स नहीं रहते हैं ना, क्योंकि वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। एंड देन द शेप ऑफ द इनपुट, लेट्स से मेरे पास एक 4x4 आउटपुट है दैट आई वांट टू गेट फ्रॉम द ROI पुलिंग। अगर मेरे पास 4x4 है दैट आई वांट टू गेट द आउटपुट, इफ माय इमेज इज 40x40, then I can slide evenly, right? But what if my image size is 32x28? ठीक है, then my box will not fit properly, right? And then they introduced a concept called quantization। So इसको क्या करते हैं, let's say this is my input है, and then after passing to the convolution layer I get the region of proposal like this। ठीक है, here this is my original box, but after rounding off the values my model thinks this is my original, this is my exact region of proposal। यहाँ पे if you look at properly, there is this field which is missing from the original data, and there is this field which is adding from the original data। so मेरा original box A है, and my model thinks this is my original box। so there is a difference between these values, right? ये आया क्यों, बिकॉज ऑफ क्वांटाइजेशन टेक्निक यूज करके राउंड ऑफ कर रहे हैं पिक्सल वैल्यूज को। एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लिव विथ इनसाइड ऑफ RCN, फास्ट RCNN टेक्निक। we are losing some information and we are adding some more information which is not needed for our model, but this is going to speed up massively because we are not passing every region separately। ठीक है,
एंड देन दिस इज हाउ दैट आर्किटेक्चर वर्क्स। मेरे पास इनपुट इमेज है, उसके बाद आई विल डू सेलेक्टिव सर्च, एंड जो सेलेक्टिव सर्च के पास आता है देन आई विल पास इट टू माय आर्किटेक्चर, and this will give me separate bunch of region of proposals. A region of proposal R1 है, R2 है, like that है, and for every proposal I will do a ROI pooling, and I get a fixed values here, and I will do a flatten, and I will do fully connected layers, and then I will do predictions on top of it. ठीक है? So this is how a fast RCNN architecture looks like. And then this is the final architecture. Just मैंने बोला ना, so we have the input image, CNN architecture, region of proposals, and then we do ROI pooling, and then we do flatten, and then we do fully connected layers, and these we will pass it to classification task, we will pass it to bounding box layer, and here there is no SVM because अगर मेरा classification is doing the same thing as SVM, why do we need it? So they removed this SVM. And why k plus 1 probabilities? Because we want to predict for the background as well. Okay? So that is a one more class added. So this is same as the one we learned in RCNN, this part, but this part is different from the one that we learned from RCNN. So this is the difference between a fast RCNN and a normal RCNN. अगर मेरे पास प्री ट्रेन नेटवर्क है, so this is how it will work. So मेरे पास इनपुट इमेज है, and I have the regions of proposals. We are still using region proposals, ठीक है? We are not eliminating region proposals. And then मेरे पास एक CNN architecture है, pre-trained model है, and we here we do introduce ROI pooling, and then we do fully connected layers, 2 layers, and whatever we get here we pass it to classification task, and we pass it to bounding box aggressor, and इसको फास्ट आरसीएन आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है? Now let's take 2 to 3 minutes for doubts and understand what is happening again. Okay, please explain ROI again. ठीक है, मैं explain कर लेता हूँ. There is one more person who wants to understand ROI again. So मैं क्या करता हूँ? Let me explain ROI. ठीक है, so I will take some space here. Let me explain here. ठीक है? हाँ. So yeah, so this is my image. So input image. ठीक है? एंड देन सेलेक्टिव से चूज करके आई गेट मल्टीपल बॉक्सेस लाइक दिस, है ना? सेलेक्टिव से चूज करके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पास दिस इनटू ए सीएनएन मॉडल, एंड सीएनएन क्या आउटपुट देते हैं? सो दिस बॉक्स आई विल गेट हियर, and this box number 2 I will get here, this box number 3 I will get here, this box number 4 I will get here, this box number 5 I will get here. So if you look at it, all of these boxes are of different shapes and different architectures, different values. अगर यहाँ पे मैं एक फुल्ली कनेक्टेड लेयर ऐड करना है मुझे, एंड और एक फुल्ली कनेक्टेड लेयर ऐड करना है मुझे, सो फुल्ली कनेक्टेड मतलब डेंस डेंस न्यूरॉन्स, ठीक है? आपको ये देख के समझ में आया होगा, ठीक है? लेट मी डू दिस, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर मैं फ्लैटन किया तो आई गेट, सो लेट्स से दिस इज 4x4, एंड दिस इज 2x8, एंड दिस इज 20x2, एंड दिस इज 4x3, एंड दिस इज 20x8, 20x10, समझो? सो अगर मैं इसको फ्लैटन किया तो ये 16 लेंथ वेक्टर आता है, इसको किया तो 16 आता है, ठीक है? इसको किया तो 40 आता है, इसको किया तो 12 लेंथ वेक्टर आता है, इसको किया तो 200 लेंथ वेक्टर आता है। अगर मेरे पास ये लेंथ फिक्स्ड नहीं है तो यहाँ पे कितना इनपुट दे दूं मैं? यहाँ पे मेरा 16 वैल्यू है, अगर इसको मैं पास करना है तो आई कैन पास 16 डेंस वैल्यूज हियर, बट यहाँ पे डायनेमिकली चेंज कर रहे वैल्यू, है ना? एंड आई कैन नॉट डू दिस वन, अगर डायनेमिकली चेंज कर रहा है तो आई वांट टू हैव फिक्स्ड वैल्यू। सो इसके लिए क्या किया साइंटिस्ट ने? लेट मी यहाँ पे क्या किया साइंटिस्ट ने, यहाँ पे इस स्टेप के बाद एक क्या किया, 16 को दे इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट कॉल्ड ROI पूलिंग। सो ये क्या करता है, ये 16 लेंथ वेक्टर इनपुट लेते हैं,
इमेज को, सॉरी दिस वन को, एंड इट विल रिटर्न लेट्स से 20 लेंथ वेक्टर, समझो समझो एग्जांपल के लिए। एंड ये भी इनपुट लेते हैं, दिस विल आल्सो बी 20 लेंथ वेक्टर। ये भी लेते हैं, दिस विल आल्सो बी 20 लेंथ वेक्टर। ये भी लेते हैं, दिस विल आल्सो बी 20 लेंथ वेक्टर। दिस भी लेते हैं, मे 20 लेंथ वेक्टर। अगर मेरा सारा आउटपुट 20 लेंथ है तो आई कैन ऐड डेंसिटी 20 हिडन यूनिट्स। ठीक है, दैट इज व्हाट द वर्किंग ऑफ आरओआई पुलिंग। ये आरओआई पुलिंग कैसा करते हैं? इट वर्क्स जस्ट लाइक मैक्स पुलिंग। It looks at all the pixel values and it takes the maximum values, and research paper में they try 2 by 2 ROI pooling, शायद मुझे exactly याद नहीं है, and they try to manipulate the image pixel values by doing the striding such that no matter what input you provide you will get a fixed output. इसको बोलते हैं ROI pooling. Sir, what have you passed? Why image along with ROI architecture? ROI ठीक है, समझ में आएगा। ओके, उमंग पूछ रहे व्हाट हैव वी पास्ड? वी पास्ड एन इनपुट इमेज विद द सेलेक्ट टू सच बॉन्डिंग बॉक्सेस, दैट इज द इनपुट एक्चुअली। Why image along with a region of proposal select to such need to send this in architecture? That is an interesting question, because if we don't have the bounding boxes that you want to predict, then how will the machine will learn? You need to send the bounding box as well, right, where there is a high probability of having an object. अगर मेरे पास image है, I will just send a single image to object and I will not provide any information regarding bounding boxes. Then how will it learn? It will become just a classification task, right? So we want to provide image along with probability of having the boxes, wherever the boxes, probability of having the highest object to score, and उन दोनों को हम बेचते and we will try to learn. And सेलेक्टर्स पे क्या करते हैं हम? We are also trying to classify based upon IOU whether a predicted box is object class or a background class, such that model will know what is a background and what is an object, at what position we have the object, and then it will train. सब शायद दो क्लियर होगा। Any more questions? How CNN will give image? I mean, Umang, I just want to understand, do you understand the architecture of CNN, how CNN works? Because if you remember in the I mean, I'm not sure if you joined the previous session or not. We have the input image and we'll do the convolution on top of it. At the end, you get an image as well. It is a feature vector of the image, and usko hum karte flatten to make it as a vector. So CNN will indirectly give you an image itself. ठीक है, then it's good. CNN architecture, if you pass an image, it will give you an image at the end. उसके बाद we extract the feature vector actually. ठीक है, any more questions, everyone? Or else are we good to go with the faster RCNNs? And because we did these things, they increase the performance of the architecture. I will not go through the numbers. If you want, I can just show you the numbers as well. Don't worry. So let me share the screen. So if you look at it, so कहाँ गया है? So if you look at this paper, this is the fast RCNN paper. And if you look at it, this is what we have learned. We have the image, we have the selector switch algorithm outputs, and then we pass to the convolution layer. We extract the feature map. We use ROA pooling, and we use fully connected layers. And then we have softmax layer for classification, and we have the bounding box aggressor. ये architecture है, and fine tune करते हैं सारे optimization techniques इस पे लिखा है actually. And if you look at it, we have MAP as 70. So थोड़ा बढ़ गया actually, 68 compared to other techniques, 68 63. So MAP थोड़ा अच्छा आ गया actually, ये सारे techniques use करके, and the prediction fastness is really increased. If you see 600 prediction भी बहुत fast हो गया. I have a table actually to explain how well the predictions are doing on. ठीक है, so now let's look at this one. यहाँ पे sorry, any more queries before we start?
Is that images before flattening? Yes. Before flattening, we get it as an image. ठीक है. Now we know that in RCNN, ठीक है, हमारे पास क्या क्या है. We have the first, we need to generate proposals using select to search. हर इमेज के लिए 1.5 सेकेंड्स लेते हैं प्रपोजल जनरेट करने के लिए. उसके बाद we need to do the predictions by training all of that stuff, and whenever you do the prediction you get 47 seconds to make one prediction, and total time to do the prediction 48.5 seconds है ये RCNN पे. But with the techniques that we used, fast RCNN पे क्या हो गया, this is going to the same because select to search को हम touch नहीं किया, so it is going to be 1.5 seconds as it is, but this 47 seconds drastically increased to 0.3 seconds. ठीक है, but total time is 1.8 seconds है. एक इमेज प्रेडिक्ट करने के लिए 1.8 seconds लग रहा है. What is FPS? फ्रेम्स पर सेकंड. अगर आपके पास जो कुछ भी वीडियो है यूट्यूब पे वीडियो और यहाँ पे जो कुछ भी वीडियो स्ट्रीम हो रहा है, दैट इज ए 24 फ्रेम्स पर सेकंड, 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 60 फ्रेम्स पर लाइक कुछ रहता है. अगर एक सेकंड पे 24 फ्रेम्स दिख रहा है मतलब इट इज ए वीडियो. अगर मैं एक सेकंड पे 24 इमेजेस को प्रेडिक्ट करना है, देन इट इज गोइंग टू बी, इट शुड बी वेरी फास्ट, राइट. यहाँ पे एक इमेज के लिए 1.8 सेकंड्स लग रहा है. अगर 24 इमेज प्रिंट करने के लिए कितना लगता है, अप्रोक्सीमेटली 50 सेकंड्स. एक 1 सेकंड वीडियो को प्रिडिक्शन करने के लिए 50 सेकंड्स लग रहा है. सो इट इज नॉट ए रियल टाइम प्रिडिक्शन टेक्निक. समझ में आया? बिकॉज वी रिड्यूस दिस बट वी हैवंट रिड्यूस दिस वन. So it is still not real time. Issue is speed, and the goal is to change this architecture in which let's eliminate select to search and try something else that will fasten the technique. So इसके लिए they introduced a new paper called faster RCNN. So this is the best model in RCNNs except YOLO. ठीक है, we have so many techniques like mask, RCNN, so there are a lot of techniques actually. And ये आ गया, and ये क्या बोलते हैं, they introduced a new concept called region proposal network. ठीक है, let's understand what this is. So पहले क्या हो गया, fast RCNN पे we have the input image, we have the convolution network, and we have the ROI pooling, and then fully connected layers, and then we have this one. अभी फास्ट RCNN क्या करता है, लेट्स नॉट यूज सेलेक्ट टू सर्च. हम क्या करते हैं, इन प्लेस ऑफ सेलेक्ट टू सर्च लेट्स ट्राई टू बिल्ड ए कन्वोल्यूशन ब्लॉक, जो CNN आर्किटेक्चर है. और एक आर्किटेक्चर बिल्ड करने का सोचा है ये लोग, एंड दे विल इनपुट दिस इनटू दिस आर्किटेक्चर. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज, रीजन प्रपोजल नेटवर्क, and this architecture will give you the region proposals. Here we are not depending on any algorithm like select to search. Instead we are passing the input image to the neural network architecture, convolution network architecture, and it will generate region proposals for you. And जो कुछ भी आपको region proposals आ रहा है, we will do a this one ROI pooling. CNN के पास करके ROI pooling करते हैं, fully connected करते, same करते हैं. So the only thing they did is they introduced a concept called region proposal network in place of select to search. So we take an image, pass to CNN architecture, get the feature map, and feature map to get the region proposals. ठीक है, but यहाँ पे क्या होता है, every object we cannot only choose one square. Let me show you that before saying that. यहाँ पे समझो ये मेरा इनपुट इमेज है, एंड अगर यहाँ पे कार है, ये देखो दिस इज द कार, राइट. अगर मैं इस कार को डिटेक्ट करना चाहता हूं, देन
I have to look at this image. I have to look at bigger image, like bigger box. So let's मैं कैसे explain करूँ? ठीक है, समझो मेरे पास this is the region of proposal है, and you are sure that इस पे car completely नहीं बैठ रहा है. So and this is not the best fit. So इसके लिए क्या करते हैं? We try to draw boxes around this box. ठीक है, मल्टीपल बॉक्स ट्राई करते हैं हम. ठीक है, एंड दीज आर मल्टीपल रीजियंस, एंड इसको बोलते हैं एंकर बॉक्स. सो लेट मी रिफ्रेज व्हाट एंकर बॉक्स इज. पहले हम क्या करना है, वी टेक ए शेप ऑफ 3x3. ठीक है, सो पहले हम 3x3 को लेते हैं. यहाँ पे समझो दिस इज ए 3x3 बॉक्स, एंड फर्स्ट विल पुट इट हियर, एंड वी विल draw some boxes around this 3x3 box, multiple shapes पे. So why are we drawing these multiple boxes around 3x3 box? We want to capture the object. If it is not fitting inside this 3x3 box, we want to find, are there any images or objects that are fitting around this 3x3 box, and इसको बोलते हैं anchor boxes. And these anchor boxes should be of different shapes and different sizes. And इसका goal is similar to Selektovic algorithm. We want to find an object inside these anchor boxes. ठीक है, look at this image. This is my main 3x3 pixel है. हमने क्या किया, we have drawn boxes of different aspect ratios. If you see, this is a bigger one, and we have bigger one like this, and we have this, we have this, we have this. So we will do multiple piece of boxes around my original region such that I want to find an object inside this. If you look at this first box, this one, there is no object inside this. I mean, जो red color का है, but it is not object. But if you look at this box, there is a high probability that the car is present inside it. So that is our goal. And then we extract all of those things. So we fix a center box, and we draw multiple boxes with different shapes with aspect ratios, such that we have to try to find the object with high probability. And हर एक box को we pass it to classification network, CNN network actually, and then we try to predict the classes, and we try to predict the bounding boxes. एक ही architecture है. So we pass it to two stuff. One is for bounding boxes, which is like height, width, center, and all that stuff. And second one is like for all the classes. ठीक है, let me summarize this once again. मुझे पता है थोड़ा complex है. So पकड़ो, मेरे पास है input image है. ठीक है, and then I pass it to my CNN architecture, and then I get this 60/40 output. कंप्रेस हो जाते हैं, ओ को पता है ना. एंड 65/40 आउटपुट पे आई विल टेक दिस रीजन, एंड इस रीजन पे आई विल ड्रॉ सो मेनी बॉक्सेस लाइक दिस. ठीक है, इफ यू लुक एट दिस, देयर आर सो मेनी बॉक्सेस विच आर आउटसाइड माय इमेज, एंड दिस आई डोंट वांट. एंड हाउ टू एलिमिनेट दिस बॉक्सेस, इसको IOU यूज करके. एंड हाउ टू कैलकुलेट IOU, क्योंकि मुझे पता है मेरे इनपुट पे बॉन्डिंग बॉक्स किधर है. आई कैन फाइंड दिस बॉन्डिंग बॉक्स समथिंग लाइक दिस यहाँ पे. नाउ आई विल ट्राई IOU स्कोर फॉर ऑल ऑफ दिस बॉक्सेस, एंड आई विल फिल्टर विथ ऑल द बॉक्सेस ग्रेटर देन 0.6 0.7 एक्चुअली ज्यादा IOU चाहिए मुझे. एंड दीज आर ऑल द बॉक्सेस that my network returned within milliseconds of time by calculating the IOU as well, such that there is a high probability of having an object. ठीक है, so if you look at it, this is my input image है, ये my ground truth है, and then मैं anchor boxes को 0.7 IOU लगा के I calculated the ground truths, and these are the things that we got. And anchor box less than 0.3, so these are classified as the background, because we want positive class and negative class, right? So these are positive labels,
with greater than 0.7 IOU. These are negative labels with less than 0.3 IOU. And इसके बाद जो कुछ भी हमारे पास आया इसको ट्रेन करते नॉर्मली। कैसे ट्रेन करते हैं? जैसे यहाँ पे ट्रेन किया हमने पहले। So we pass it to the ROA pooling and all CNN ROA pooling and then classification technique and then bounding box. So we do these things and then ये सब करके what they did is they achieved very interesting results which is very fast actually. So let me explain the difference between all of these things. So पहले हमारे पास RCNN है. So we have selective search, region proposals, CNN architecture. We do the SVM, classification task, and bounding box regressor. And fast RCN क्या किया? Select search plus image. We pass it to CNNs. You get region of ROI pooling. And then you do the fully connected layer. यहाँ पे only classification and bounding box. And then उसके बाद fast RCN पे क्या किया? They introduced one more called region proposal network. इनपुट इमेज में पास कर लेता हूँ, इसको पास करता हूँ, इसका जो आउटपुट आता है आई विल पास इट टू आरओआई पूलिंग. यहाँ पे फुल्ली कनेक्टेड लेयर है, दो दो फुल्ली कनेक्टेड लेयर है. एंड देन आई विल डू क्लासिफिकेशन बॉन्डिंग बॉक्स. सो यहाँ पे क्या हो गया? एंकर बॉक्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके दे रिड्यूस द टाइम टू अ लॉट ऑफ स्टफ. इफ यू लुक एट दिस टेबल, सो पहले आरसीएनएन प्रपोजल जनरेट करने के लिए 1500 मिलीसेकंड्स ले लिया and ये भी 1500 milliseconds लिया, but our fast RCNN is just taking 10 milliseconds. So it is a massive jump of 250 times. So here faster RCNNs can be used for real-time prediction because they ditched selective search algorithm and try to build a CNN architecture which is not too complex so that it can make predictions very easily and fast. And then they will do the object detection using faster RCNNs. So this is the history of how object detection started and what are the key concepts of RCNNs and how they did this and what are the drawbacks and how they solved the drawbacks in faster RCNNs and what are the drawbacks in faster RCNN and how they solved in faster RCNNs. And now faster RCNN is one of the staple technique in object detection task in day-to-day life. I mean, I know this is not the too depth of the concepts, and because I didn't want to cover too depth because it takes a lot of time and that doesn't make any sense for you as well. Abhi aapke paas you get an idea of what are the key concepts that are present, and if you go and read research papers, let me show the research paper once again. So that is also important. So let me do a faster RCNN research paper. Agar if I do this and if I go to view PDF, if you look at it, so they create feature map based on CNN layers. If you look at it, they have the input and then convolution layers, region proposal networks, ROI pooling, and then classifiers. So likewise, they introduced this and they did the object detection task at real time. Hopefully that is clear. So these are all the concepts that we have learned in these topics, and we can look at the numbers here. If you look at it, we have 70, where is MFP results? Faster RCN is much better actually compared to other stuff. References. Okay, okay. You can read this paper. It will be really helpful if you read this. If you want to know more details about these papers, and let me stop sharing. So let's take 5 minutes for some doubts, and then we will jump into the coding part, and we will take an object detection task, and we will do the object detection using faster RCNs using PyTorch. So हम next cover करते हैं उसको. Sorry. Any queries so far? Before flattening from the CNN, feature map would be the same size. How we have different image size of images? How come it will have same size? Because we do multiple kernels, multiple layers, right? And it will get multiple values. So it is not traditional BGG architecture. I mean, they modified a little bit.
such that you get different outputs, region proposals every time you pass an input image. Okay. ठीक है. Any more questions before we jump? Model how to Jabo, this is car or human. We have the labels, right? So initially in a given input image, you know मॉडल हाउ टू नो. ओके ठीक है, मेरे पास एक इनपुट इमेज है एंड एज ए ह्यूमन बीइंग यू नो वेयर इज ए कार एंड वेयर इज ए पर्सन, एंड आप लेबल करते बॉक्स लगा के ओके दिस इज ए पर्सन एंड दिस इज ए कार. उसके बाद आप प्रपोज करते इन रीजन्स को हो सकता है कार और पर्सन. एंड उसके बाद कैसे लेबल करना है उसको. इफ आईओयू स्कोर 0.5 से ज्यादा मैच हो रहे, जो प्रेडिक्टेड बॉक्स और आपका ओरिजिनल बॉक्स है उसको कार का नाम दे दो और पर्सन का नाम दे दो, नहीं ये तो बैकग्राउंड का क्लास का दे दो. देन यू पास दोज टू इंफॉर्मेशंस टू द मॉडल, सो मॉडल विल लर्न अबाउट दोज थिंग्स. ठीक है. चलो, एनी मोर क्वेश्चंस बिफोर वी स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट. एक मिनट दे दो, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ. हाँ, anchor box is also creating more box. Sorry, anchor box technique is also creating more boxes, but the speed of creation is very, very, very fast compared to select to search. Select to search is taking around 2 seconds. Let's assume. अगर वही boxes को predict करने के लिए you are using a convolution architecture and that is getting the proposal boxes in like milliseconds. So that is where the optimization happens. इसके अंदर के डिटेल्स मुझे भी पता नहीं क्लैरिटीली, आई मीन कैसे करते हैं, आई मीन इट इसका जरूरी है भी नहीं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ओके, एक सीएन आर्किटेक्चर है दैट इज डूइंग दैट. लेट मी गेट सम वाटर बिफोर गोइंग इनटू द कोडिंग. ठीक है, चलो, आई विल शेयर द नोट्स आफ्टर द सेशन एंड्स एंड आई विल आल्सो शेयर द नोटबुक एज वेल, सो डोंट वरी. So let me share the screen. So let me know once the screen is visible. अगर केगल केगल दिख रहा है तो बताओ प्लीज. Yes, I will also share the score code. Don't worry. Once session ends, it will be uploaded on the website. ठीक है, चल रहा है, दिख रहा है. ठीक है. सो हम एक एग्जांपल लेते हैं. ग्लोबल वेट डिटेक्शन का एक चैलेंज है, केगल पे पोस्ट किया होगा. एंड देन व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक दिस टास्क एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग RCNN टेक्निक्स, फास्टर RCNN टेक्निक स्पेशली. ठीक है. So before going in understanding about the code, first let's understand what is the problem at hand. And a global detection is a problem that is posted on Kaggle, and we have $15,000 for the winners actually. And there are 15,000 entries, 2,600 participants, a lot of stuff happened. Okay? So let's understand what is this. So we have the data like this. हमारे पास wheat का डेटा है, wheat plants का फोटोस है. And what they did is they gave us this data something like this. Let me show you this. Give me a minute. So where is the data? So if I go to data and if I look at this, so I have something like this train.csv. Sorry.
So यहाँ पे if you look at it, I have the image ID, and then what is the shape of the image? All of the images are 1024 plus 1024, and इस image पे मेरा bounding box का location किधर है? So this is the location is x, y, and width and height है. I will explain that. Don't worry. And if you look at it, all of these are same image IDs, क्योंकि एक इमेज पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, एंड यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्टिव वीट है. वी कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, बट आई हैव टेकन ओनली वन ऑब्जेक्ट बिकॉज इस टास्क पे वही है. ठीक है. एंड दिस इज द डेटा. And if you look at it, you can read about this data. We have training data, we have testing data, and all of that stuff. And if you read the overview, you can understand how this data is prepared. So it will give you the domain knowledge actually. And they are using YOLO V3 and RCNN as the best techniques so far, but we can train more. And if you look at it, evaluation, they want to do the evaluation by using the IOU score. एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट MAP. अगर वो दोनों अच्छा है तो अच्छा है. एंड देन AOU कैसे कैलकुलेट करते, दे आल्सो गेव यू दैट. एंड सबमिशन फाइल कैसे रहना चाहिए, एंड फर्स्ट प्राइस कितने, सेकंड प्राइस कितने, सारे सारे डिटेल्स है इस पे. ठीक है. एंड दिस इज ओपन सोर्स वन दैट वी कैन यूज एक्चुअली. And whenever one thing that I will suggest is, whenever you are learning something from, please show that I'm sure I will show. Don't worry, Pramod. We're going to go completely into this data set. I मैंने एक नोटबुक बनाया, बट उस नोटबुक से पहले I want to teach you how to utilize Kaggle. That is also a major important factor actually. So whenever you see something like this, you can click on the code. If you look at it, we have so many notebooks here. ठीक है. And you can click on models, you can click on discussions. यहाँ पे लोग they will try to do some questions, they will try to answer or help other people, and you can read those things and you will learn a lot of stuff by reading these discussions actually. And you can implement those techniques inside your notebooks बाद में. And then we have leaderboard. So this is the ranking actually, and rules and all that stuff, blah blah, which we don't want. So now let's go to the code. Samjho, you are new to the coding and you don't know what to do and how to do the data analysis और modeling कैसे करना है पता नहीं है मुझे आपको. So इसके लिए you can just search for EDA. So EDA मतलब क्या है? Exploratory Data Analysis. And here what I will do most votes. And if you look at it, global V detection 51 comments है, and there are a lot of ups, and I will just open this one. ठीक है. So this is the work of Alexandra Diaz. Thanks to her that we are able to look at this, and she is Kaggle Master Data Scientist at Collabra. ठीक है. Here global V detection EDA. EDA मतलब expert data analysis है. Before going into the coding part, let's understand what is happening here. I will not go through the code. You can go through the code with all that stuff, but I want to show you what is happening here. Let's plot some examples. See, if you see, these are the examples actually. So हमारे पास एक image है. इस image के अंदर we have the bounding boxes for all the weight heads. This is the input data. ठीक है. We can see a lot of images, and images are of different color. I mean, this is green color, this is dark green color, different lighting techniques पे images है. So and we have boxes for all of these kind of images. And now you might question, who did these boxes? That is also important question, right? Usually they will have a team of persons who will draw these boxes manually. You need to do these boxes manually, and uske liye you can use tools like RoboFlow and all that stuff. They will help you do that stuff. Don't worry. And uske baad we will look at all the statistics, spikes kidhar hai, number. I mean, these are the boxes which are having less number of spikes. And then both number, these are the image. If you look at these images, there are very less number of objects present inside it. If you look at this, there are very large number of objects present inside it. That is what this graph shows. So we have some objects, images in which we have 250 boxes in the image.
and there are some which are having 100, both combined. So I mean, if you look at 0 to 20, 40, 60, 80, 100, 120, sorry, 120 is the max number of boxes, but majorly 30 to 40, 30 to 34 is the peak value, lot of images है. And then we can look at the other stuff, all the things, but this is just to show you how to visualize this, all this stuff, ठीक है. This is all ED है, जो कुछ भी है, and you can read about these things and all of that stuff. You can do transformations. So इसको बोलते हैं explorative data analysis से. By looking at this notebook, you will get to see how the coding is being done, and you will also see how to maintain a notebook at such a high quality. So that is what I will do. Whenever I want to do learn some things, I will go to the competitions. I will click on the code. I will understand what is happening. And one of the things that we are going to learn is also inside this map. Maybe because let's do faster CNN, faster RCNN. See, there are so many notebooks with faster RCNNs on the same topic. So you don't need to worry about anything. If you don't know anything, just go to the notebooks and learn by yourself. ठीक है? Hopefully थोड़ा ज्ञान मिल गया. I don't want to do those things, but ठीक है. हाँ. So a notebook I will share बाद में. I am using Kaggle because the competition is on the Kaggle, and you can directly get the notebook from here, and you don't need to load the data, download on all of that stuff. ठीक है? If you click on the code and if you click on new notebook, what it will do is it will open an environment like this, and it will have the data as well. All of my input data, we got it. Okay. So we are using PyTorch. PyTorch is similar to Python के, similar to everything यार, much different, ज़्यादा difference नहीं है. And let's understand कैसे करना है, क्या करना है. So let's start the session. And before starting the session, I want you to add the GPU accelerator here, because it is a deep learning object detection task. If you don't have GPU, you are not going to have the training done in a very small amount of time. अगर GPU नहीं है तो it takes days and days to train actually, because it is of image data. And अगर GPU enable करना पड़ेगा हमें, and then it will be faster for training. And let me session started. So let me execute this. Torch vision आई है PyTorch के लिए. Torch vision already है, but I'm just adding here such that it will be easy for you to ठीक है. And then now we will do a lot of imports from libraries. Here we are using OS library, random collections, NumPy, Pandas, PAL, Matplotlib, Torch vision. And this is important. Torch vision dot models dot detection dot faster RCN, import faster RCN predictor. If you don't know anything about these things, I highly recommend you to go to the documentation page. So this is the documentation page of PyTorch faster RCNN. यहाँ पे multiple models है. मैंने बोला ना पहले, we are using CNN architecture. यहाँ पे I can use ResNet 50, ResNet 50 V2, MobileNet V3. There are a lot of pre-trained networks are there, and we are going to use transfer learning in this course or in this session, because training from scratch is going to take a lot of time. So we are going to do a transfer learning, and you know the advantage of transfer learning based upon our previous sessions. So पहले हम क्या करते हैं, let's read the data. So यहाँ पे train.csv का नाम पे एक data set है, and let's read this data. And if you look at it, let's execute this. So sorry, let's import all of these things. See, deep learning or machine, जो कुछ भी हो, training, coding is not the worst part. Understanding the concepts and how to tweak and how to customize the things, that is the worst part actually. Coding, you can get it from everywhere. Yeah, if you know the techniques and what is happening, that is good enough. If you look at it, I have the image, and I have the width and height, and these are the boxes. So let me explain something regarding the box. So this is an image, and this is a bounding box.
सो हमें जो दिया है, दिस कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 एंड विड्थ एंड हाइट, सॉरी, दिस इज विड्थ एंड दिस इज हाइट, ए विड्थ है हाइट होता है ना। सो हमारे पास ये दिया, बट व्हाट वी वांट फॉर आवर प्री ट्रेन्ड मॉडल इज दिस वन, x1 y1 एंड x2 y2, ये दोनों चाहिए हमें। अगर मेरे पास ये डेटा है, हाउ कैन आई गेट दिस डेटा? सो दिस इज माई x1, ठीक है, एंड दिस इज माई y1। अगर मैं x1 को विड्थ से ऐड करता हूँ, देन आई विल गेट दिस पॉइंट। अगर y1 को, हाइट को कम डिक्रीज करता हूँ, दिस इज y1 माइनस h, सो आई विल गेट दिस लाइन, राइट। सो ये क्या होता है, x1 बट विड्थ कमा y1 माइनस हाइट, राइट। सो गिवन एनी कोऑर्डिनेट and width and height, I can convert to any kind of coordinates that I want. But in the pre-trained network, they use this bounding box technique, the both corners, ठीक है। So let's go back here. So इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, we are trying to first unbox this box into multiple columns। इसके लिए we are using lambda functions and we are giving the names as x1 y1 w and h। so I will do this one, and then I am doing a p dot concat, and then this is my final df। इस पे क्या क्या है, मेरे पास इमेज आईडी है, विड्थ है, हाइट है, बाउंडिंग बॉक्स है, एंड द सोर्स ऑफ द इमेज है, एंड देन वी स्प्लिट दिस इनटू मल्टीपल सेक्शंस। यहाँ पे 834 है, वी हैव 834, 222, 222, 56, 56, 36 and 36। we haven't done anything fancy here, we just unbox this list into multiple columns, ठीक है। एंड देन वी आर कन्वर्टिंग ऑल ऑफ दीज इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्योंकि कभी कभी डेटा क्वालिटी इश्यू हो सकता है, दैट इज वी आर कन्वर्टिंग दिस इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज, एंड देन वी आर कन्वर्टिंग दिस इनटू समथिंग लाइक दिस। सो हमारे पास x1 y1 हो गया, x2 y2 आ गया, एंड हमें क्या क्या चाहिए अभी, वी नीड द इमेज and where the box coordinates are, that is my input। वही है ना, someone is asking how the model will learn where the box is, so this is the ground truth values people has given to us। and यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग के लिए I need image ID and I need the coordinates, I don't need any of the other stuff। इसके लिए मैंने बाकी सबको ड्रॉप कर लेता हूँ, df डॉट ड्रॉप, ठीक है। so let me execute here and then df dot head। So this is my final data set in which I have my image ID, my x1 coordinate, y1 coordinate, x2 coordinate, and y2 coordinate, ठीक है। Hopefully that is clear। So let me show you that। So 834 to 22, so मेरा coordinates कैसे है, so x1 y1 x2 y2, so मेरा coordinates कैसे है, 834, 222, 890, 222, 890 एंड 258। सो मेरे पास इमेज समथिंग लाइक दिस। सो मेरा x1 क्या है, 834 है, समझो दिस 834, एंड x2 क्या है, 890 है, एंड देन 222 है, समझो दिस इज 222, दिस इज 834, 890 एंड 258। सो दिस वुड बी दिस दिस। सो ए पॉइंट होता है 834 क्रॉस 222, ए पॉइंट होता है 834 क्रॉस 258, ए पॉइंट होता है 890 क्रॉस 222, ए पॉइंट होता है 890 क्रॉस 258। सो इस चार पॉइंट्स को देने के लिए अच्छा है ये चार दे दो मुझे, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ द बॉक्स एक्चुअली। सो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी हैव डन। एंड देन वी हैव एक्सट्रैक्टेड ऑल द इमेज आईडीज, नंबर ऑफ इमेज आईडीज कितना है ये ले लिया हमने, ऑल द इमेज आईडीज से। इफ वी लुक एट इट, दीज आर स्ट्रिंग वैल्यूज, ये इमेज नहीं है, ये स्ट्रिंग है, बट इमेज कहाँ है, इनसाइड दिस ट्रेन फोल्डर। इफ यू लुक एट इट 00bf, इसको ये इमेज है, लेट मी शो यू दिस। सी दिस इज एन इमेज, दिस इज एन इमेज,
सो अभी क्या हो रहा है, मेरे पास डेटा सेट है, ऑल द इमेजेस आर इनसाइड माय ट्रेन डायरेक्टरी, बट ऑल द findings, sorry, mappings are in the data frame. So whenever I want to read an image, I want to find this image id inside this test train folder and then print the image. ठीक है, सो वैसे एक्सेस करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट विथ आवर फास्टर आरसीएनएन कोड। ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ विल हैपन। So because this is a custom data set, we want to create a class called whatever name you want, you can create. But what PyCharm, PyTorch will expect you, or FasterRCN will expect you to have it is get item, initialization whenever you try to give a class, and the length of the items. This is mandatory actually. Whenever you try to create a custom class for a custom data set, you have to create get item method inside of it. This is mandatory है। अगर ये नहीं है तो आपका PyTorch का कोड चलता है नहीं for faster RCNNs. Don't worry, if you don't know about classes and all that stuff, I will not make it too complex. I will try to explain it in a better way. So हमने इनिशियलाइज किया डाटा सेट को। सो जो डाटा फ्रेम हमारे पास है वो डाटा फ्रेम पास कर रहे हैं हम। वी आर सेविंग इट इनसाइड self.df, and then all the unique images that we have taken here, we are saving it in self.unique images, and all the indices, this is just for accessing the images, don't worry. And then we have something called as get item. This is important. So first we will get the images. Image name क्या है इस पे ले लेते हैं हम। How are we doing this? Unique image id. So this is the unique image id, right? इस पे we are trying to find जो कुछ भी हमें चाहिए वो इस पे ले रहा था। एंड देन अगर मेरे पास ये इमेज है, लेट्स से दिस इज माय इमेज, I have the bounding boxes for all of these images inside my data frame, right? Now I want to get all the bounding boxes corresponding to this image. So let's go to this part here. मेरे पास एक इमेज है एंड इस पे मल्टीपल बाउंडिंग बॉक्स है। So what I'm doing is first I'm getting the image and then I'm getting all of these bounding boxes. And this bounding box information where I have it inside my data frame. And how am I going to get it? By accessing the image ID. Okay? So here data frame के अंदर I am trying to find my image with the image name that we get, and then I am going to get all of the other columns except the image ID. Dot values, all the columns except the first, all the rows and all the columns except the first column. And then I'm converting them into a float format. So box पे क्या होता है? For a given image, all the bounding box of that particular image. And उसके बाद हमने इमेज को रीड करना है। कैसे रीड करना है? What did I tell you? Image is present inside this train folder, but the path is inside. So I will take this path train path. So if I paste it here, so if I do this, so this is my path where my image exists. So whenever I'm trying to read it, I have to read it using that path. So what I'm doing, image.open. So we are reading that image with the image name .jpg. Why .jpg? If you look at this data frame here, we have the image ID. But if you look at the data inside my directory, we have image ID .jpg. So that is why we are reading with .jpg and we are converting into an RGB image. Okay? And this image ko we are trying to convert it into this image we have it, and then whatever the boxes that we have, we are creating that inside give me a minute. Labels is basically all the box ko liye ek hi label. If you look at this data,
So every image is having the same label called weight. So we have all the labels inside these boxes inside a tensor, and then all the bounding boxes we are creating inside a tensor called target. एक डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी के अंदर बॉक्स का नाम पे एक है, लेबल का नाम पे एक है. सो हाउ इट विल लुक लाइक, लेट मी एक्सप्लेन दैट. सो सो दिस इज माय इमेज. ठीक है. इस गेट आइटम क्या करता है, गेट आइटम it will return me a tensor. What is this tensor? Tensor is called target. इस टारगेट एक डिक्शनरी है. डिक्शनरी पे की वैल्यू होता है. फर्स्ट की है विच इज बॉक्सेस, एंड सेकंड की है लेबल्स. इस बॉक्स पे वी हैव 4 कोऑर्डिनेट्स. लाइकवाइज ऑल द बॉक्स रहता है. एंड इसका लेबल क्या है, वीट वीट वीट. इट कुड बी एनी लेबल, क्लास 1 बिकॉज इट इज गोइंग टू बी नंबर क्लास 1 बिकॉज वी हैव ओनली 1 क्लास. ठीक है. हर एक बॉक्स को लेबल 1 है. ठीक है. एंड हाउ आर वी क्रिएटिंग इट, by doing this function. So let me rephrase again. We have the image and we get the bounding boxes. We read the image and then we create labels, and then we push all of that into a tensor called target, and we are saying t dot to tensor image and target. ये मेरा image है, ये मेरा information है. So यहाँ पे image, what is the image? The one that we read. So this will be doing my image and what are my boxes and what the labels corresponding to those boxes. So this is the pre-processing step that we have to do. And then before doing any machine learning or deep learning task, we are required to do a validation and train test split. अगर चाहिए तो कर सकते, नहीं है तो भी नहीं कर. It depends on individuals preferences. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, we are just 10% को validation रख रहे हैं, 90% को training रख रहे हैं. We are just doing a test train split and we are creating a wrapper called custom collate. What this will do is, समझो मेरे पास एक इमेज है, उस पे 100 बॉक्सेस है और एक इमेज है 50 बॉक्सेस है. The number of values in the dictionary in the target is going to differ, right? So that is why it is not optimal. So हम क्या करते हैं, we have function called custom collate. If you don't know about this, you can say custom collate PyTorch documentation, and if you custom collate function, see, you can read these things and you will understand what is happening. But at a high level क्या होता है, custom collate will help maintain the structure of data when it is batched together. Especially it returns the data in list tuples where each tuple contains image tensor and correspond target directory. Data को एक tuple पे return करते हैं. Tuple पे we have the image tensor and the dictionary. ठीक है. यहाँ पे वही कर रहे हैं हम actually, 2 tensor इन दोनों को tuple करके return करते हैं proper wrapper के साथ. Sorry. And then हम क्या करते हैं, we have learned about data loader techniques, right? In Keras पे भी we have data loading techniques. So इस पे क्या होता है, we will load the image in batches such that we will not run out of memory. And यहाँ पे we have function called utils.data loader. Data loader पे we need to pass the data, so we will pass the custom data function call class here. यहाँ पे custom data class को call करते हैं and इसको input देते हैं data frame, unique images and train IDs. And then we have the batch size 16, and then we have the shuffle equal to true and custom collate function. And what we are saying is go with the CPU कूड़ा if it is available, नहीं है तो छोड़ दो. Validation के लिए वही कर रहे हैं. And then we will do this. And then this is the important stuff. Here, let me show you this. Let me execute all of this separately. Okay. The arguments weight enum or none for weights are deprecated, should be removed. The current behavior is equivalent to weights equal to fast RCNN dot coco v1. You can also use fast dot default. Acha, they have changed these things, but we can
इट इज जस्ट अ वार्निंग है, बट हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आई हैव यूज दिस रेस्टनेट 50 fpn. So ResNet 50 fpn, I can use any other technique like ResNet 50 fpn v2, MobileNet v3. You have to try with other stuff. And let me print the model. And if you look at it, so we have the backbone CNN architecture. CNN architecture कैसे है? Convolution 2D, Frozen batch normalization, Convolution 2D, Frozen batch normalization, ReLU, Convolution 2D, and then Frozen batch normalization. ये सारे एक चीज है. And we have it for multiple times. 2, 3, 4, 5, 6, and at the this is a fully very big convolution layer. And then we have feature pyramid networks, and then region proposal. मैंने बोला ना, region proposal network. We have another convolution network to get the regions. So we have region proposal network. यहाँ पे we have RPN head, sequential data, convolution 2D, convolution 2D, ReLU, and we have convolution 2D and convolution 2D with all the strides and padding. And then we have multiscale ROI. मुझे भी पता नहीं multiscale ROI क्या होता है, but we can read about it. And then at the end, we have fully connected layer 6 and fully connected layer 7. And then if you look at this one image here, where is the architecture diagram? So if you look at this one, we have fully connected layer 6, fully connected layer 7. And then we have the box predictions. यहाँ पे दो चीजें, we have the prediction score object के लिए and we have the bounding box prediction के लिए. समझ में आया? So we have the whole architecture here inside our model, and then we are saying number classes is equal to 2. Why the number of classes 2? Because we have only one class called weight head, but we also want to create one more class called background. If you remember, we are trying to do C+1 classes. And then at the end here we are having 1024 features, but we don't want that much because we only want to predict only 2 classes. इसके लिए हम क्या करते हैं? इस मॉडल को we are updating these features into, if you see this in features, we are trying to do it number of classes. Now let me do a model here. And if you look at this here, output features is equal to 2. So why 2? Because we are only trying to predict whether the object box is an object or not. That means weight or background. अगर weight और background है तो predict the bounding boxes. ठीक है? That is how the model has been changed for our custom data set. अगर आपके पास ज्यादा क्लासेस है, ज्यादा कर सकते हैं आप. And now we are trying to incorporate CUDA if CUDA is available. CUDA is basically GPU technique है. And then we are trying to do optimizer. STD use कर रहे हैं हम. Learning rate is 0.01 and momentum is 0.9. And we are going to train for 5 epochs only. Once we start the training, I will take a lot of queries, so don't worry. And here for epoch in number of epochs. So for every epoch, initially epoch loss is 0. What we are going to do is we are going to loop over the training data set. Here inside this we have images and targets. And then we are getting the image data, and we are trying to push all of the data to the GPU for faster performance के लिए. And then this is the model that we have. So this is the model that we are having, right? इसका नाम क्या है? मॉडल है. इस मॉडल को हम इनपुट पास करना है. क्या पास करना है? द इमेजेस एंड द टारगेट्स. टारगेट क्या है? टारगेट पे वी हैव द बॉक्स एंड वी हैव द लेबल्स. टारगेट्स डॉट अपेंड टारगेट. हमारे पास बैच ऑफ इमेजेस है. उस इमेजेस को द बाउंडिंग बॉक्स क्या है, लेबल्स क्या है, हम भेज रहे. दिस इज द फॉरवर्ड प्रोपगेशन स्टेप. एंड उसके बाद वी विल डू द लॉस कहाँ कहाँ होता है? wherever the model has been trying to predict whether it is a class or the box, it will try to find the loss. वो दोनों लॉस को सम कर रहे हैं हम. उसके बाद हर एक एपॉक लॉस को ऐड कर रहे हैं. वी वांट टू ट्रैक हर एक एपॉक पे लॉस कम होना चाहिए. And then we are trying to do a backward propagation.
एंड ऑप्टिमाइजर को एनेबल कर रहे हैं. सो दिस इज द कस्टम ट्रेनिंग लूप. इट इज नॉट लाइक मॉडल डॉट फिट. ऐसा काम नहीं करते ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे. वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ. होपफुली इट इज क्लियर. अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इफ यू लुक एट इट हियर, आई हैव दिस थिंग्स. लॉस लॉस प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, बस कुछ नहीं है. आई कैन डू दिस, and it is going to take a lot of time to train, but let's wait for 5 to 10 minutes such that it will train at least one epoch correctly, such that we know that code is working fine. And then in the meantime, let me upload one data set here. Upload new data set. Let me stop sharing first, and then let me upload, and then let's get back to the queries. Faster RCNN. Create. So let me share the screen again. चार्ट नहीं है, शेयर कहाँ है? शेयर. ओके. So I am currently uploading a notebook here, which is not notebook है, which is modified faster RCNN. मैंने पहले ये मॉडल ट्रेन करके रखा है actually, and I saved this model, right? And now I am uploading this data model directly such that we can use it directly. And you can train this model yourself later on, but time constraint के लिए मैंने already मॉडल ट्रेन करके रखा है, उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ. And let's this is let me let's wait for this to done, and then in the meantime we will take some queries. Can we do this using keras? Keras पे भी कर सकते हैं चाहे तो, but PyTorch is a little bit easy compared to the keras when in terms of object detection, all of these tasks. We have only 20 participants. ठीक है. Maybe recording people can use later on. Any more questions before we do the model training and all that stuff? We still have 30 minutes. We can talk general stuff as well. It is still taking some time. Please wait while processing your data set. ठीक है. Um, yeah. Any more questions? No more questions? No one? That is strange. I am familiar with Keras only. Is PyTorch easy to learn? Urban Wonk, yes, PyTorch is also very easy to learn, and it is also needed for a lot of tasks actually. अगर आप केरस पे कोड करना चाहते हैं वो सारे चीजें, इफ यू लुक एट योलो, योलो भी केरस पे कोड करना है तो इट इज थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर PyTorch है तो यू हैव a lot of flexibility. And even if you are thinking about learning LLMs and all of those stuff, PyTorch is the best language to go. Keras or TensorFlow से अच्छा है actually. Sir, which optimizer we have to use in this model? Optimizer you can change anything. Normally SGD, AdaGrad, RM, जो कुछ भी है. I mean whatever we have learned previously, वही optimizer. We haven't touched about optimizers actually. It is still taking time. It is a hyperparameter. Yes, Umang, it is a hyperparameter, but you can follow standard procedures and optimize as well. यार ज्यादा बात करना भी मुश्किल है यार, 2 घंटा सीधा. ठीक है. It is still taking time. Let me get some water.
ठीक है, लेट्स गेट बैक टू इट। सो क्लोज कर लेते हैं। इट विल अपलोड इन द बैक एंड, शायद, मुझे पता नहीं है अपलोड होता है नहीं, बट आई विल शेयर इट लेटर ऑन। सो इफ यू लुक एट इट, first epoch execute over here, and we have a loss as 212, and we want this loss to be decreasing. And usually people train 200 epochs, 300 epochs to get better results, and we are just doing 5 epochs just for learning purpose. But I would recommend everyone who is trying to learn a lot of stuff, try to do a lot of epochs. And here, once the training has been done, we will do evaluation, and then we start the predictions in that validation data. अगर validation data मतलब this is the validation data, मेरा test data है, test data पे I have the image ID and I also have the ground truths. So let me go here. So this is my test data, and यहाँ पे मुझे पता है किधर किधर ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। And what I will do is I will not give any of these boxes to the model. I will just give the image to the model, and this image will predict the boxes. That is a task, right? And we will also see the how fast it is predicting the boxes. So if you look at it, मैंने मॉडल को एक इमेज को दे दिया, यहाँ पे इमेज को दिया बस, आई एम नॉट गिविंग एनी ऑफ द बॉक्सेस और लेबल्स। And when I'm trying to do prediction model of image to device, it is giving me this output. If you look at it, we have boxes. So these are all the bounding boxes का जगह है। So location है x1 x2 हमने जो ट्रांसफॉर्म किया पहले। So like this, it is giving me the box coordinates, and every list is a box actually. एंड देन हर एक बॉक्स को उसका लेबल क्या है, वी हैव ओनली वन क्लास, इसलिए सारे लेबल्ड एज वन, ठीक है। एंड उसके बाद हर एक बॉक्स का प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.99 है, 0.98, 0.98, 0.13। सो लाइकवाइज वी हैव मल्टीपल बॉक्सेस फॉर अ गिवन इमेज, and then what we need to do, we need to do a non max suppression NMS. NMS मतलब क्या है, we have to sort for a given object all the bounding boxes and remove the bounding boxes which does not meet the maximum IOU. Here I am putting IOU score as 0.45. You can tweak this, and मैं इस आउटपुट को NMS पे डाल दिया मैंने। NMS कोड you don't need to write yourself, अगर चाहिए तो कर सकते हैं actually, but we have a class available in PyTorch. एंड देन मेरे पास पहले 94 बॉक्सेस है, एनएमएस अप्लाई करने के बाद 3 बॉक्स रिजेक्ट कर दिया, सो वी हैव टोटल 91। एंड इस 91 बॉक्सेस को आई एम प्लॉटिंग दिस इनसाइड माय यूजिंग द इमेज आर्किटेक्चर। एंड इफ यू लुक एट इट, दिस इज माय ओरिजिनल वैलिडेशन इमेज, एंड इमेज पे वी हैव द बाउंडिंग बॉक्सेस एट अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इमेज, हर एक को वी हैव इट। There might be some inconsistencies because we haven't trained much, but even then, because we have used the concept of transfer learning, we were able to predict a lot of other stuff with 5 epochs only. And then we have to save the model. कैसे करना है, torch.save model.dictionary and then whatever the name you want, ठीक है। And then you can try to predict for more images as well. If you look at it, this is another image that we got predictions. If you look somewhere, it is missing something, but ठीक है, much better actually. And if you look at this one, another image that we have done the predictions using the model. And then this is the code to load the model, actually saved model, load the saved model, ठीक है। ये कैसे करना है बताता हूँ। So how to load a saved model? So पहले we need to create an instance of ResNet 50
यहाँ पे वेट्स को फॉल्स करना है क्योंकि वी हैव ट्रेन्ड आवर मॉडल आवरसेल्व्स, वी डोंट वांट टू लोड द मॉडल विद द ओरिजिनल वेट्स। सो यहाँ पे पहले देखा तो, वेयर इज दिस, if you look at it here, when we are trying to train the model, initially we have taken the weights because we want to fine tune the model. But when we are done with training and when we want to load the model again, I think this is still running. We are at second epoch. Here, when we are running, we want the weights to be false, such that we will update this with our own weights. And ए मॉडल को हमने आर्किटेक्चर चेंज किया, नंबर ऑफ क्लासेस को दो दो किया, एंड दिस इज द मॉडल दैट वी गॉट विद द वेट्स एज फॉल्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ क्लासेस 2 है, क्रिएट मॉडल किया, एंड इस मॉडल को हमारा ट्रेंड मॉडल को डालना पड़ेगा। मॉडल 2 डॉट लोड स्टेट डिक्ट टॉर्च डॉट लोड वॉट एवर द मॉडल दैट यू सेव्ड, keep it here, and this will be your final trained model. And then enable CUDA as it is. And if you look at the architecture, you have the architecture likewise. And then the same code that we used for predictions, you can use it as it is, but make sure you change the model name, and then you can make the predictions accordingly. So let me summarize what we have learned inside the coding part as well. I think it is still running this model. If you look at it, we are at second epoch. 5 epochs is good enough actually. So initially we understood about, let me summarize everything actually. By the time it will do the modeling part as well. So we have learned the disadvantage of RCNNs, and then how fast RCNNs comes into picture, and what is a ROI pooling, and